and M2 is equal to supremum of G. ये हम प्रूव करें। ये याद रखें कि हमें ये गिवन है F and G both are functions of bounded variation. Let P be the partition of AB. Given हमें क्या है कि F and G are functions of bounded variation. Both functions are bounded variations. Then this implies that total variation of F and total variation of G are finite. ये हमें given. Now total variation of F plus G is equal to supremum summation I is equal to 1 to n absolute del F plus G I. ठीक हो गया? That will be del Fi plus del Gi. अब हम absolute की property को use करते हैं, which is less or equal to supremum summation I is equal to 1 to n del Fi plus del Gi. ठीक हो गया? That will be less or equal to, because supremum of F plus G is less or equal to supremum of F plus supremum of G. So which is less or equal to supremum of summation I is equal to 1 to n del Fi plus supremum of summation I is equal to 1 del Gi. ये किसकी definition है? It is the definition of total variation of F, and this is the definition of total variation of G. So since it is given that both F and G are functions of bounded variations, this means that total variation of F and total variation of G both are finite quantities. If the total variation of F plus G is less or equal to a finite quantity, this means that F plus G is also a function of bounded variation. ये हमारे पास सेकंड था कि F माइनस V का, ये सिमिलर प्रूफ है F प्लस G की तरह, बस यहाँ पर थोड़ा सी ट्रिक है कि हमें यहाँ पर भी ट्रायंगल इक्वालिटी यूज करनी, which is less or equal to supremum summation I is equal to 1 to n del Fi absolute plus absolute del Gi. Now supremum of F plus G is less or equal to supremum of F plus supremum of G. So that will be less or equal to supremum of summation I is equal to 1 to n absolute del Fi plus supremum of summation I is equal to 1 to n del Gi. That will be the total variation of F plus total variation of G. Okay. A total variation of F and total variation of G both are finite. This means that this is also finite. This implies that F minus G is also function of bounded variations. ये हमारे पास है जी तीसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट क्या है जी? प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट में हमने ले लिया सपोज लेट H is equal to Fg, and the total variation of H from A to B is equal to supremum of summation I is equal to 1 to n absolute del Hi. Del Hi हमारे पास है is equal to H of xi minus H of xi minus 1. ठीक हो गया? H किसके बराबर है? Fg के, वो वैल्यू पुट करें, हमारे पास आ जाएगा f of xi g of xi minus f of xi minus 1 g of xi minus 1. यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करें f of xi g of xi minus 1. यहाँ से f of xi कॉमन ले लें और यहाँ से g of xi minus 1 कॉमन ले लें, तो हमारे पास ये आ जाएगा f of xi del gi plus g of xi minus 1 del fi. So the total variation of H from A to B is equal to supremum of summation I is equal to 1 to n absolute del Hi था, del Hi की हमने ये वैल्यू पुट कर,
Now हमें एक फैक्ट पता है कि if f and g are functions of bounded variation, then both f and g are bounded. So suppose करते हैं कि f of x I is bounded by m1 and g of x I minus 1 is bounded by m2. क्या हमने ट्रायंगल करेक्टली लगाई? हमारे पास ये चीज आ गया कि एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी, since this is bounded by m1 and this is bounded by m2. Now we know that supremum of f plus g is less or equal to supremum of f plus supremum of g. So that is less or equal to supremum m1 बाहर निकाल लें, supremum of summation I is equal to 1 to n del gi plus m2 supremum of summation I is equal to 1 to n del fi. Now this is the total variation of g and this is total variation of f. Since both are finite, because f and g are of bounded variation, so this implies that the total variation of fg is also finite. So if the total variation of fg is finite, then this implies that fg is function of bounded variation. अब मैं एक दफा सारी स्लाइड्स दोबारा चला देता हूँ, आप लोग नोट कर लें. जी नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है कि जी लेट f be a function of bounded variation on AB, then lambda f is also a function of bounded variation, and also total variation of lambda f is equal to absolute of lambda into total variation of f. ये जरा प्रूफ करके दिखाएं मुझे, सिंपल सा है, 2-3 लाइनों का.
जी ओके। यस सर। हाँ जी बिलाल सर ये एंड में हमारे पास डेल मॉड जी जो है वो बाहर कॉमन आ जाता है। क्या हुआ? मैंने कहा एंड में जो ये लैम्डा है, लैम्डा मॉड कॉमन आ जाता है, वो उसकी डेफिनेशन बन जाती है वेरिएशन ऑफ एफ की बाउंडेड की। तो दो फाइनाइट नंबर आ जाते हैं हमारे पास, दो फाइनाइट नंबर का प्रोडक्ट भी हमारे पास फाइनाइट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वेरिएशन ऑफ लैम्डा ठीक एफ ठीक इज आल्सो फाइनाइट। ठीक ठीक। Let P be the partition such that, and we know that total variation of F is equal to supremum summation I is equal to 1 to n absolute of del Fi। ठीक हो गया। अब ये टोटल वेरिएशन ऑफ एफ, टोटल वेरिएशन ऑफ लैम्डा एफ क्या होगा? यहाँ डेल्टा लैम्डा एफ आई हो जाएगा। अब लैम्डा बाहर निकाल लें, कांस्टेंट है। ठीक हो गया, तो ये आ गया डेल्टा एफ आई। लैम्डा को समेशन से ये यहाँ सुप्रीमम भी आएगा इस जगह पर। सुप्रीमम समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन डेल एफ आई, वो किसके बराबर था? टोटल वेरिएशन ऑफ एफ के। अब ये टोटल वेरिएशन ऑफ एफ जो है वो हमें गिवन है कि वो फाइनाइट है, तो ये भी फाइनाइट है, वो भी फाइनाइट है। दिस implies that total variation of lambda f is also finite, which shows that lambda f is also function of bounded variation। अब है जी हमारे पास एफ जी दो फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन के, और g of x is greater or equal to lambda है, then which is greater than 0, then we have to prove that f over g is also function of bounded variations। ठीक हो गया जी। अभी हमने सम प्रोडक्ट, सम डिफरेंस प्रोडक्ट का किया, अब हमारे पास f ओवर g है। Let h is equal to f over g। So total variation of a to b hi, ठीक हो गया। del hi is equal to -1, that is equal to f of xi over g of xi minus over now this is equal to LCM ले लें। Now if we add and subtract f of xi g of xi, -1, ठीक हो गया। फर्स्ट टू टर्म्स में से एफ ऑफ एक्स आई कॉमन आ गया और दूसरी में से जी ऑफ एक्स आई कॉमन आ गया। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया डेल एच आई किसके बराबर आ गया?
एफ ऑफ एक्स आई कॉमन ले लें फर्स्ट टर्म में से, तो वो आ गया जी ऑफ एक्स आई -1 आई, और दूसरी में से कॉमन ले लें दूसरी में से जी ऑफ एक्स आई कॉमन आएगा, और डिनोमिनेटर में था हमारे पास दिस इज इक्वल टू, ये इसको पहले लिख लें, जी ऑफ एक्स आई डेल एफ आई आ जाएगा। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स आई, ये पहले आ जाएगा जी एक्स आई और ये बाद में चला जाएगा जी एक्स आई -1, तो ये बन जाएगा हमारे पास डेल जी आई। -1 ठीक हो गया जी। अब टोटल वेरिएशन ऑफ जो h था, h हमारे पास क्या है, f ओवर g, दैट वाज सुप्रीमम समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, डेल एच आई था, डेल एच आई की वैल्यू पुट कर दें, और हमारे पास क्या आई है, g ऑफ एक्स आई डेल एफ आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई डेल जी आई ओवर ये चीज आ, ठीक हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्स आई डेल जी आई। ठीक हो, since it is given that g of x is mod g of x is greater or equal to lambda for all x, ठीक हो गया, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में लेस आर इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा, ये भी लैम्डा के लेस आर इक्वल टू होगा और ये भी लेस आर इक्वल टू लैम्डा के होगा, लैम्डा इंटू लैम्डा कितना होगा, लैम्डा स्क्वायर, वो बाहर निकाल लें 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर, सुप्रीमम समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर ट्राइंगुलर इक्वालिटी लगा लें, आ जाएगा हमारे पास प्लस डेल जी आई, ठीक हो गया जी। अब सुप्रीमम ऑफ f प्लस g is equal less or equal to supremum of f plus supremum of g, and we know that g and f are functions of bounded variation, इसका मतलब है this will be bounded, this will be bounded, suppose this is bounded by m2 and this is bounded by m1, so that will be less or equal to 1 over lambda square सुप्रीमम, यहाँ ये m2 से बाउंडेड है तो m2 बाय निकाल, m2 सुप्रीम i is equal to 1 to n डेल एफ आई प्लस ये m1 से बाउंडेड है, सुप्रीमम डेल जी, ठीक हो गया, this is the total variation of f and this is the total variation of g, so that is equal to
m2 over lambda square total variation of f plus m1 over lambda square total variation of g. ठीक हो गया. So total variation of f and total variation of g both are finite quantities. So this means that this whole quantity is finite. So this implies that total variation of f over g is less or equal to a finite quantity. This means that f over g is also a function of bounded variations. This completes the proof. ये हमें given statement है कि g that f and g are functions of bounded variations. ठीक हो गया. Then absolute of g of x ये भी साथ में given is greater or equal to lambda, which is a positive constant. Then prove that f over g is also a function of bounded variations. Let p be the partition of a b such that b is equal to this, and suppose that h is equal to f over g. Then the total variation of h by definition is equal to one question. g. सर इधर हमने g of x mod greater than or equal to lambda किया है, तो उधर हम यूज कर रहे हैं less or equal to lambda. वो डिनोमिनेटर में आ गया है ना. तो फिर वहां 1 over lambda तो नहीं आना, 1 over lambda नहीं आएगा, अकेला lambda नहीं आएगा सर. वहां 1 over lambda किसने लिखा है? lambda ही लिखा है. ये देखो. जी सर. इसको आप देखो ना, g of x is, अगर इसको इस तरफ ले जाओ और इसको दूसरी तरफ ले जाओ, 1 over g of x is less or equal to 1 over lambda हो जाएगा. और यहाँ पर हमारे पास 1 over g of x है ना, that will be less or equal to 1 over lambda. So by definition total variation of h is equal to supremum I is equal to 1 to n del hi. Now del hi suppose del hi is suppose equal to h of xi minus h of xi minus 1. ठीक हो गया. h is equal to f over g, उसकी वैल्यू पुट करें f of xi over g of